हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इज अ बहाना। एक बहाना है बेड से ना उठने का, एक बहाना है कंटिन्यूअसली फोन यूज करते रहने का। हेलो देयर एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब सीरीज आसान भाषा में। Here we will be explaining to you some complicated terms from various domains in super easy language. And today let's talk about depression. कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, its symptoms, its causes and everything around it. हम सभी ने कभी ना कभी किसी को कहते हुए सुना है कि उन्हें डिप्रेस्ड फील हो रहा है। हम कभी खुद भी फील करते हैं दैट शायद वी माइट हैव डिप्रेशन। बट बिफोर, if we are talking about some mental illness and we do not talk about the taboos associated with it, it feels kind of incomplete. Depression is an excuse for bad marks and low academics. But please, do not make fools out of yourself. हम सभी को कभी ना कभी बुरा, सैड और लो फील होता है and that's completely normal. None of us is a superhuman जो हर दिन बेड से उठ के दुनिया जीत ले. Do not confuse grief with depression, for grief is transient. But जब हम इसी पेन, इसी सैडनेस के साथ क्वेश्चन करने लगे अपनी सेल्फ एस्टीम को, हमें वर्थलेस फील होने लगे और हम किसी भी टास्क को करने से पहले ही हार मान लें, एंड ये सारी नास्टी फीलिंग्स कंटिन्यू रहे फॉर 2 weeks और मोर देन दैट, देन यू नो दैट यू हैव डिप्रेशन. It can be caused at any age, to be honest. Depression has no age. You can feel depressed at any point of your life. But according to research, people in their late teens and mid-20s are more prone to get depressed. Its causes, they're not just only a heartbreak or a failure. The cause can be biochemical, genetic, and many such topics which are still under research. Let's talk about the most common symptoms of depression. भूख का ना लगना या excessive भूख लगना which eventually results in either weight loss or weight gain. जो activities कभी favorite हुआ करती थी उन्हें करने का बिल्कुल भी मन ना करना. Trouble falling asleep and trouble leaving bed, and sometimes even both of them. Just because चोट दिखाई ना दे doesn't mean that it isn't real. And let me tell you a fascinating fact कि हमारे ब्रेन के सेम एरियाज एक्टिवेट होते हैं जब हमें या चोट लगती है और when we feel emotionally low. So when the brain does not differentiate between mental or physical injury, if we do that, that would be a complete insanity. And sadly, according to National Institute of Mental Health USA, for an average person suffering from mental illness, it takes more than 10 years to reach out to help. Stop stigmatizing these sensitive topics. And if you feel relatable with whatever I have said in this video, please reach out to a professional help or reach out to Rahi. Thank you so much. Have a great day. Stay physically and mentally well.